Fund of fund explain. Fund of fund is a mutual fund scheme which invests in the scheme of same mutual fund or other mutual fund instead of investing in securities. Hence, फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है वो या तो सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज. दिस फंड्स कैन इन्वेस्ट इन equity oriented, debt oriented and liquid scheme or sector specific schemes. Depending on the investment style of the fund manager, fund of fund scheme can be broadly classified into sector specific funds. Such type of fund invest in different sector of the economy, thus hedge themselves against the underperformance of any sector by taking the advantage from the rise in another sector. Hence, सेक्टर स्पेसिफिक फंड एक ऐसा फंड है जो इकोनॉमिक के डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है. अगर उनमें से कोई एक लो परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो किसी जो अनदर फंड जो हाई परफॉर्मेंस दे रहा है उससे अपना एडवांटेज गेन कर लेते हैं. एसेट एलोकेशन फंड्स. दिस फंड्स डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग several different asset class at the same time. By varying the stock bond proportion, the fund endeavors to endow the investors with a appropriate asset allocation in different stages of their lives. They are also known as a life cycle of fund. Here is the diagram. Investor है वो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करेगा और जो फंड ऑफ फंड है वो फंड 1, फंड 2, फंड 3 यानी कि बहुत सारे फंडों में इन्वेस्ट करेगा. Here is the benefit of fund scheme. Diversification, uncomplicated and cheap. Diversification. Has a fund of funds invest in the scheme of the other fund, it provides a greater degree of diversification. As you know, fund of funds invest in the scheme of the other funds यानी कि वो अलग अलग स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक ग्रेटर डिग्री मतलब डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा स्कोप है. Uncomplicated. Instead of investing in different stock unit of mutual fund and keeping a track record all of them, it will be much easier to invest in and track only one which in turn invest in other mutual fund. Hence, बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर दो और सिर्फ उसी का ट्रैक रिकॉर्ड रखो. चीप. While entering into the capital market, it is difficult to diversify because of limited fund. फंड्स लिमिटेड होते हैं इसलिए हम हर एक फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. फंड ऑफ फंड प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन विच कंपेरेटिवली लिमिटेड अमाउंट. Here is the another advantage risk. Investor can turn down the risk by choosing the route because of diversification. Even if one stock scheme is not performing well, risk level comes down. अगर कोई एक फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर इसका जो रिस्क होता है वो और के मुकाबले कम होता है. एक्सपर्टाइज ऑफ वाइडस मैनेजर. हैज़ इन द केस ऑफ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ फंड स्कीम ऑल्सो वर्क अंडर द डेलीगेंस ऑफ द फंड मैनेजर. दिस गिव द स्कीम एडिशनल एक्सपर्टाइज हैज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड स्कीम. This scheme also provides access to information which may be difficult to obtain for an investor on a case-by-case basis. Hence, in the अगर बहुत सारे फंडों में फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए मैनेजर्स भी बहुत सारे लगेंगे और अलग अलग मैनेजर की अलग अलग एक्सपर्टाइज होंगे जिससे कि रिस्क कम होगा. Here is the disadvantage of the fund of fund scheme. Additional fees. अगर अलग अलग मैनेजर्स होंगे तो उनको अलग अलग फीस भी देनी होगी. The more diversified the fund is, the greater the likelihood that the investor will incur a incentive fee in one or more of the constituent managers, regardless of overall fund performance. Associated risk associated with all the underlying fund get added at this level. Following are the type of the risk associated with the fund of fund. जितने भी फंड ऑफ फंड जितने बाकी भी फंडों में इन्वेस्ट करेगा उन सभी का रिस्क एसोसिएट होकर फंड ऑफ फंड के साथ जुड़ जाएगा. मैनेजमेंट रिस्क. every fund manager has a particular style of diversification. This diversification style will be in perfect correlation with the number of manager involved. The view of a manager may be altogether. Operational risk. Due diligence of a scheme in itself rise to operational risk. Quality risk.
This included risk associated with the manager involvement of funds such as the organization structure of investment process, etc.